Interpretation of statutes as a subject is not a separate kind of discipline. It's part and parcel of the whole body of law that you have studied. The constitutional law, several statutory laws, means ordinary laws, they all need the help of interpretative tools sometimes in order to understand or comprehend their meaning. Usually, the simple grammatical meaning of any word or sentence is preferred, but sometimes interpretation is not such an easy exercise. It requires some special tools, some special methods to be employed to have a clear understanding of the law. It is necessary for judges, it is necessary for lawyers, both, because ultimately through the clashes of arguments and counter arguments does the judgment emerge. So, in order to arrive at a conclusive and lucid judgment, the law has to be interpreted properly. So, interpretation of a statute, of course, assumes a great deal of significance. As I told you, it's not a specific subject, it's not a codified type of law, it is only based on principles of interpretation. So, first you will have to understand the statutes, then I will be telling you what all principles and subjects we will get to cover in this discussion. What is a statute? The statute means law, simply means law. In our country, law is of two species. One is constitutional law, which is the suprema lex, and the other are several ordinary laws, which one way or the other have been made in pursuance of the objectives of the Constitution. Of course, there are some pre-constitution laws as well, but by way of interpretation, they also are said to be in consonance with the provisions of the Constitution now. So, pre-constitution law also are by way of interpretation serving the goals of the Constitution as well. So far as post-constitution laws are concerned, about them there is no doubt that they are made in pursuance of the goals of the Constitution. The subjects outlined in the Constitution form the basis of the laws that have been made post commencement of the Constitution. So, law in our country is one suprema lex, supreme law, which is the Constitution of India, the Constitution of India, and ordinary laws. These ordinary laws are called as statutes. These ordinary laws are called statutes generally. In England, constitutional enactments are also known as statutes because there is no separate constitution or codified constitution in England. But in India, we have done some classification at the notional level. Constitutional law is the supreme law and all other laws are ordinary laws, and they are conveniently called statutes. But in England, constitutional law too would be regarded as a statute. In our country, ordinary law is generally regarded as a statute. So far as the rules of interpretations are concerned, they are applicable to both suprema lex and ordinary laws also. When we are, or when the judges are
interpreting the provisions of the Constitution, they may take the help of interpretative tools as they have been settled or pronounced by courts through successive decisions. And when ordinary laws are up for interpretation, these interpretative tools come in handy. They can be applied in order to interpret the provisions of ordinary law as well. We will be discussing what those tools are exactly. But the Constitution of India is the supreme law, and ordinary laws are generally known as statutes. And based on this simple self-styled classification, you can say that whatever is enshrined in the Constitution, whatever is comprised in the Constitution, can conveniently be called constitutional. For example, territory of India is the constitutional aspect. Territory is the territorial aspect of the nation, is the constitutional principle, is guided by the constitutional principles. Supreme Court, High Courts, Prime Minister, President, they all are mentioned in the Constitution. They are either constitutional bodies or constitutional functionaries. Whatever is comprised in a constitution or in the Constitution is called constitutional, and whatever is enshrined or comprised in ordinary laws are called statutory. For example, CVC, Central Vigilance Commission, is not mentioned in the provisions of the Constitution. As such, CVC cannot be called a constitutional body because CVC is not mentioned in the Constitution. Where is it exactly mentioned? In a statute. In CVC Act 2003, you will find the mention of Central Vigilance Commission. Therefore, based on this, you can say that CVC, Central Vigilance Commission, is a statutory body. It's that simple. जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो बात स्टैट्यूट में उसको स्टैट्यूटरी कहेंगे. लैंग्वेज बहुत क्लियर होना चाहिए. इंटरचेंजेबली वर्ड्स को हम यूज नहीं करते. Police as a subject is of course mentioned in the Constitution. If you cast a look at the 7th schedule of the Constitution, there you will find the mention of police in the state list. But for that reason, police do not become a constitutional body, because that is only an enabling provision authorizing the state legislature to make law as regards the organization and functioning and powers of the police organization. The mere mention of police in the Constitution doesn't make them a constitutional body. Police as an organization in different states have been set up according to the laws made by the respective states, because police is a state subject. Therefore, following the model of the Police Act 1861, almost all of the states in India have enacted their own laws in order to provide for the organizational structure and functioning of the police. Therefore, police can be said to be a statutory body. Delhi Police, Haryana Police, Uttar Pradesh Police, they all can be called a statutory body, as a body or an organization, because their mention is, because they have been mentioned in ordinary laws. That's why. समझ आ गया? तो जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो बात ऑर्डिनरी लॉ में होगी वो स्टैट्यूटरी. अब उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वर्ड यूज करेंगे, उसी हिसाब से फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन वर्ड हम यूज करेंगे. डिपेंड करता है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी रिलेटेड केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं और स्टैट्यूटरी लॉ के इंटरप्रिटेशन से भी रिलेटेड केस कोर्ट तक पहुंचते हैं. यूजुअली हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल कोर्ट है, वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का भी काम समय समय पर करते हैं. कैसे करते हैं? हाउ डू दे डू इट? what exactly occasions them to interpret the provisions of the law or the Constitution? As you are aware, Article 226 of the Constitution enables us all to approach the High Court to have our fundamental right or statutory right enforced by the writ of that court.
and we can directly approach the Supreme Court also by way of a writ petition presented to it in order to have our fundamental rights enforced with the Article 32 of the Constitution. So when we are making an assertion that such and such a right of mine has been violated at the hands of the state, the High Court or the Supreme Court may have occasion to delve into the law, to read between the lines as they are contained in the law or the Constitution, and come up with a final meaning in order to ascertain whether a fundamental right or any statutory right in actuality has got violated or not. कोई केस हम अपने फंडामेंटल राइट वायलेशन का या स्टैट्यूटरी राइट के वायलेशन का लेकर जाएं हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो अगर लॉ की लैंग्वेज बहुत क्लियर है, फैक्ट अपने आप में बहुत सेल्फ एविडेंट हैं, तो हमारे रिट कोर्ट्स कोई डेप्थ में कोई इन डेप्थ एविडेंसरी प्रोसीडिंग तो चलाते नहीं, एविडेंस का बस एक प्राइमा फेसी व्यू लेकर वो रिट इशू कर सकते हैं, स्टेट की एजेंसी को वो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंडेट कर सकते हैं कि आप यह कीजिए या यह नहीं कीजिए, सो दैट कि हमारे फंडामेंटल राइट या स्टैट्यूटरी राइट का प्रोटेक्शन हो, उसका रेस्टोरेशन। तो इस तरह से जिस राइट का क्लेम हम कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कई बार ये राइट कहां से आया यही डिराइव करने के लिए या तो कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर लॉ का इंटरप्रिटेशन करना पड़ सकता है, राइट है भी या नहीं। जैसे राइट टू लाइफ, अगर कोई ये क्लेम करे, जैसा मेनका गांधी जी ने क्लेम किया था अपने पिटिशन में 1978 जजमेंट इफ यू रिकॉल, कि राइट टू ट्रैवल अब्रोड इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, it is part of freedom of movement as well, and there is a connection between the provisions or the freedoms contained in Article 19 and the general guarantee of protection to right to life contained in Article 21 of the Constitution. The Supreme Court on her plea was constrained to interpret the provisions of Article 19 and 21 of the Constitution in light of the due process clause as they are there in the American Constitution. तो पिटिशनर आर्ग्यू करता है कि यह उसका राइट, अगर एग्जैक्ट में वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर डिस्क्राइब्ड है, मेंशन्ड है, तब तो कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, वो बड़ी इजीली वो राइट इन्फोर्स कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। लेकिन कई बार राइट एग्जैक्टली मेंशन्ड नहीं और फिर भी पिटिशनर का कहना है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, बाय वे ऑफ रीजनिंग वो प्रूव करना चाहता है कि कैसे उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो पिटिशनर उसी पर रिलाई करेगा और शो करने की कोशिश करेगा कि राइट टू लाइफ जो है ये अपने आप में इतना सिंप्लिसिटी टाइप का प्रोविजन नहीं, इसको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए, इसको वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड्स हैं राइट्स के इंटरप्रिटेशन के मामले में उसको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट ऐसे ही रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करते हुए राइट टू लाइफ को जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको एक्सपेंड करेगा। तो हो सकता है कि वो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को राइट टू लाइफ का पार्ट डिक्लेयर कर दे, विच द सुप्रीम कोर्ट indeed did in the Menka Gandhi case in 1978 by way of an expensive interpretation of Article 21's right to life. The Supreme Court held that right to life simply doesn't mean simply animal existence of life. It means more than that. Whatever is necessary to make the life livable and meaningful must be included in right to life as they are there in Article 21 of the Constitution. तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं ये कि फंडामेंटल राइट या स्टैट्यूटरी राइट के इन्फोर्समेंट के लिए जब आर्टिकल 226 के तहत कोई पिटीशन हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए या आर्टिकल 32 के तहत कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो सकती है। ये एक ओकेजन जहां पर
कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा ओकेजन क्या हो सकता है? दूसरा ओकेजन ये हो सकता है कि किसी मैटर की सुनवाई के दौरान, उसके एडजुडिकेशन के दौरान लोअर कोर्ट को ही, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ही ये महसूस हो कि इसमें सिर्फ फैक्ट ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लॉ का भी, इस डिस्प्यूट में, इस लिस्ट में लॉ का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है। और हमारे लोअर कोर्ट्स जो हैं वो लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं करते, दे आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो कोई लीगल प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी लीगल प्रेसिडेंट सेट है, स्टेयर डिसाइसिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारे लोअर कोर्ट्स उसको अप्लाई करते हैं। और अगर राइवल कंटेंशंस के द्वारा किसी मैटर में उनको ये मालूम हो जाए, लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, कि इस डिस्प्यूट के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में एक रेफरेंस वो हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं और फिर हाई कोर्ट से वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में लॉ को इंटरप्रीट किया जाए और रिकॉर्ड को सेटल किया जाए, सो दैट कि हम इस मामले में प्रॉपर गाइडेंस रिसीव कर सकें और जो मेरे सामने केस पेंडिंग है मैं उसको सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ के लाइट में कंक्लूड करूं, उसमें जजमेंट एंटर करूं। तो इस तरह से हाई कोर्ट के पास एक ओकेजन आता है तब जब लोअर कोर्ट बाय वे ऑफ रेफरेंस टू इट request the high court to interpret the provisions of the law or the constitution.